हमारे पास भी थोड़ा सपना है और आज हम देख रहे हैं कि वो हकीकत हो रहे हैं बिकॉज अगर ऐसे एक प्लेटफॉर्म हम दे सकते हैं प्लेयर्स को, युवा खिलाड़ियों को, तो उनके लिए एक अच्छा मौका मिलते हैं जहां नॉट ओनली आर आर प्लेयर्स प्लेइंग इन प्रो कबड्डी लेकिन स्टार्टिंग 7 में भी है एंड दैट टू मी इज़ द बिगेस्ट प्लस राइट। वो सिर्फ स्क्वाड साइज के लिए नहीं है, वो स्टार्टिंग 7 में है एंड आई नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। मैं हूं अंकित और कहते हैं ना कि लाइफ में जब कोई मोमेंट इंटरेस्टिंग सा होता है और बार बार मिलता है तो मुझे लगता है ये मोमेंट मेरी लाइफ में दूसरी बार आया है। मेरे साथ वॉइस ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स है सुहेल चंदोक सर। लास्ट टाइम इन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दी थी, मैं कोशिश कर रहा हूँ उस पर काम करूँ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सेइंग यस फॉर दिस इंटरव्यू। नो अप्रिशिएट इट। फर्स्ट क्वेश्चन सर जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये टूर्नामेंट, इस एडिशन को आपने कैसे देखा और क्या अच्छी बातें निकल कर आई इस टूर्नामेंट से? एक्चुअली इट्स इन सम सेंस हमारे पास भी थोड़ा सपना है और आज हम देख रहे हैं कि वो हकीकत हो रहे हैं बिकॉज अगर ऐसे एक प्लेटफॉर्म हम दे सकते हैं प्लेयर्स को, युवा खिलाड़ियों को, तो उनके लिए एक अच्छा मौका मिलते हैं जहां टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी और फिर उनको एक आगे एक मौका आएगा, वेदर इट्स प्रो कबड्डी, वेदर इट्स प्लेइंग फॉर इंडिया, जहाँ भी होते हैं इट्स गॉट टू स्टार्ट समवेयर वेयर दे कैन बी सीन. And I think for us, we've had some fantastic partners, you guys included, FanCode as our broadcast partners as well. Everyone else from the federations to the government to everyone else that's supporting us. But all of that comes together so that we can give these guys, a platform. I mean, the faces you're seeing behind us here, they're suddenly becoming household names across the country. You'll see them in Pro Kabaddi teams very, very shortly. More than 30 players actually from our last edition are now playing Pro Kabaddi. And for me, that is a testament that we are on the right track. Whatever happens from here, we can be proud that we're doing things correctly. So that was my next question. That how do you feel like a lot of players, when I was here in the last edition in Jaipur, a lot of players which I used to see there, they are playing in Pro Kabaddi League right now. So what is your feeling, because you're associated with Pro Kabaddi League also? So what is your reactions around this? बहुत गर्व की बात है यार बिकॉज अगर आप 2 साल 3 साल पहले हमें ये बात हम दोनों बात करते थे तो there was no idea that we could have pulled this off, right? And I think just the way that it happened from just a conversation between a few of us saying how can we bring more live action. COVID happened, it hurt us all I think in many ways, but the answer was how can we create our own live events so that they don't have to go looking for places to play kabaddi, right? And for me the biggest moment of pride was when teams from Pro Kabaddi call and say, hey guys, we're in search of a cover, we're in search of a corner, we're in search of a good raider, can you suggest a few players? Then we had scouts coming and turning up and watching. I mean, you were there for our last final and you saw the scouts turning up and there in large numbers. Not only are our players playing in Pro Kabaddi, लेकिन starting 7 में भी है and that to me is the biggest plus, right? वो सिर्फ squad size के लिए नहीं है, वो starting 7 में है and I think that tells you that the talent from here is ready. सिर्फ उनको एक मौका दे, you'll see what they can do. So I was talking to one of the statisticians, Ashwin over here. So he suggested a very beautiful thing, but I just want to take your point of view कि आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है तो स्टैटिस्टिशियन हर टीम में मौजूद है, इवन युवा कबड्डी में भी स्टैटिस्टिशियंस मौजूद हैं। तो कैसे एक प्लेयर जो टॉप प्लेयर्स होता है उसके अगेंस्ट आप प्लान करते हो, तो आप तो प्लान कर लोगे, आप उस प्लेयर को रोक लोगे, बट हाउ दैट प्लेयर डेवलप्स देमसेल्फ, उस सिचुएशन में वो क्या नया ला सकता है? सो आई थिंक प्लानिंग एक चीज़ है लेकिन एग्जीक्यूशन एक और चीज़ है, एंड आई थिंक एग्जीक्यूशन इज़ वेयर थिंग्स फाइनली कम डाउन. कोच 100 मतलब शब्द बोल सकते हैं लेकिन अगर वो एक प्लेयर वो एक शब्द को इधर नहीं रखते हैं तो इट्स ऑल लॉस्ट. सो आई थिंक one thing is to create plans and have statisticians to do it, but secondly is to see what teams require. How can we assess a player? We don't just assess a player on the points they score. We assess a player based on who they play against. We assess a player based on their etiquette off court, on their disciplinary actions, on how they are within the team environment. We've been doing media training with these guys. We do workshops with them. So for us, when we offer players to teams in Pro Kabaddi, we want these players to be ready, not just as players, but as human beings as well. And I think that's something that we wanted to do from the start. Teach them about financial literacy, teach them about banking. अभी पैसे मिल रहे हैं उनको, उसके साथ क्या करें? So I think that sort of stuff you can't learn once you get to the big leagues. By then it's too late. So I think if you can shape an individual, for us that's as important as them scoring points on court. Sir, what will be the message to Yuva Kabaddi fans as well as the fans of Kabaddi? I think keep encouraging Yuva Kabaddi, not for us, but for these guys behind you, for all the players that are playing. They are really pouring their heart and soul in because for them, ये अंत नहीं है, ये तो फाइनल स्टेज नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है. इधर से एक प्लेटफॉर्म जहाँ इधर मिल रहे हैं, इसको यूज़ करके they want to go on to bigger things. Give them the encouragement, support them, watch them,
send them your Instagram messages and your Twitter messages and put smiles on their faces because they are putting smiles on your faces. You're seeing amazing jumps, crazy tackles. So encourage kar lo. Watch more kabaddi, not just us. Watch all the kabaddi that's happening because ये ecosystem जो है kabaddi का, that needs to grow. If that grows, kabaddi is a winner and everyone here is a winner. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक्स अ लॉट.